So we are trying to understand what productive failure means from the people who have designed productive failure, and this will help children to discover learning. So let me just say this much. Maybe we can have a discussion after Alfred has done his bit. Yeah. Okay. Yeah. And, I think the way I'm approaching is just to give it a bit of flavor, and then we can have that discussion. I think that's what is really interesting. So my name is Alfred Aloysius. I'm the co-founder of a company called LearnPF. PF stands for Productive Failure. I'll give you an intro to the company in a minute. I come from a background of more on the business side. I served in the military, worked for some MNCs, both in Singapore and the US, as well as in the UN as well, right? Serving in Africa. With me is Rahul. So Rahul is our man on the ground in India. And he is helping us to, coordinate with a lot of schools and all that as we try to roll out this pedagogy throughout India. So my agenda today is I'll give a bit of introduction on who we are, and then a bit more details on productive failure. I won't go into a lot of details because I think there are people who already know productive failure, but we'll keep it as a Q&A session. And I thought, because this is always the hot topic, let's talk about AI as well, and how we in LearnPF think about AI in education, and what we think are important design principles, and then we can have a bit of a discussion. Alfred, Please do stop me anytime. Yeah, sorry, go ahead. We have Yes. a reasonable amount of Hindi audience. So I Okay. would blow the whistle here. Yeah. हमारे साथ एल्फ्रेड हैं। एल्फ्रेड सिंगापुर से आए हैं। एल्फ्रेड हमें बताएंगे कि आप एजुकेशन में एआई को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्फ्रेड थोड़ा सा समझा दें, फिर मैं आपको हिंदी में उसका लक्ष्य, मकसद और ये सेशन का क्या कारण है वो मैं आपको समझा दूंगा। Over to you, Alfred. Thank you so much. Maybe I need Rahul to help me deliver the message anyway. Anyway, just a bit of info for LearnPF. We are Singapore Swiss base. Singapore, that's where we're headquartered, but a lot of the research has been in Switzerland. And fundamentally, we're in AI as a startup, but very much focused on education and only productive failure as a pedagogy. And the way we like to work is we think the most valuable way of doing this is to work with schools and with teachers and sort of integrating it to whatever lesson flow curriculum that the school already has. And in the end, we want to see, what has been translated in science for both academic performance, but also non-academic performance, things like resilience, critical thinking, and creativity, which I'll be sharing later. I'll take a pause. Maybe Rahul, you do a bit of a translation. Yeah, I think that would be good. Yeah, Rahul, if you don't mind. I'm putting you on the spot, but carry on. Yeah, that's okay. I'm not the most apt in Hindi, but just as Alfred is saying, for the Hindi audience, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्टिव फेलियर, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ये एक सिंगापुर और एक स्विस स्टार्टअप है, और ये प्रोडक्टिव फेलियर जो लर्निंग है उसको स्टूडेंट्स में उसके थ्रू वो स्टूडेंट्स कैसे अच्छा लर्न कर सकते हैं, उससे कैसे क्रिएटिविटी उनकी बढ़ सकती है, उनकी थिंकिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स, ये कैसे उनका शार्प हो सकता है इस साइंस की वजह से, जो 20 साल से ज्यादा रिसर्च जिस पे हो रहा है, वो चीज में ये कंपनी करती है। और उसके बारे में और एल्फ्रेड बताएंगे, तो मैं आपको और mention. Please, Alfred, please continue. Thank you. So I think you can't talk about productive failure without talking about my co-founder. So about 20 years ago, Manu Kapoor, professor, he started getting an idea, right? If we all agree that we learn from failure better, or we do learn from failure,
why do we not intentionally design for it, right? In any field, it can be in education, it can be in math, within education, science, it can even be in companies and stuff, right? So Manu is a professor of learning sciences, so he spent his lifetime, right, researching about education, first understanding, right, the nature of education, and then how do we then apply it in a way that is useful to students, right? And there, after about 20 years, he consolidated his knowledge and wrote the book called Productive Failure, which we launched, or he launched, in November last year in India. And this puts together the entire dynamics as well as a mechanism, right, on why the science has proven, or how the science works in productive failure. Okay, Rahul? या तो जैसे अल्फ्रेड बता रहे हैं कि प्रोफेसर मन्नू कपूर की ये साइंस है जिसपे 20 से ज्यादा साल से वो रिसर्च कर रहे थे। वो टीचिंग और लर्निंग के प्रोफेसर हैं और इन्हें अपने रिसर्च में इतने सालों में ये देखा है कि कैसे हम फेलियर जैसे टॉपिक को लेके बच्चों में बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और भी अच्छी कर सकते हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। सो जिससे रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं बच्चों के लर्निंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के। तो डॉक्टर प्रोफेसर मन्नू कपूर हैं जो इस यूनिट जो शुरू से लीड कर रहे हैं इस रिसर्च को। और एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा कि जिस जगह ये प्रोफेसर ऑफ लर्निंग है डॉक्टर मन्नू कपूर, वो एक बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में, स्विट्जरलैंड में बेस्ड है, फेडरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 22 नोबेल लॉरिएट निकल चुके हैं, जो और उनमें से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे जो यहाँ पे पढ़े भी थे और जिनने यहाँ पे बाद में पढ़ाया भी। सो ये Yeah, thank you. बताना चाहता हूँ। Yeah. So yeah, just to add on to that, why me and Manu started doing this is very interesting, because we've known each other since we were in university together. And so, we had a catch up a year ago, and he told me about this, and I thought, what an amazing idea. And that's how LearnPF started. So, what is productive failure, right? I just prepared one slide for it. There's a lot of details we can go into. But the idea is today, and certainly when I was in school, how we learned instruction is the expert, the teacher, tells us the information about the concept. It might be a formula, all right? It might be insights. It might be why the concept is important and why we're doing it. And then there is usually an example, and we go into problem solving, where maybe a student is given a problem to solve, right? Now, in India, right, you have come out with the NEP strategy and vision. And even in the early one, 2020, right, the idea of moving away from rote learning, shallow understanding, and transfer is something that has been recognized, which is one of the issues with direct instruction. What we find, even in Singapore, which does very well in math, for example, is a lot of it is based on a lot of tuition, for example, a lot of practice to reinforce and make sure we have an ability to pass the exam. And then what happens in exams is, if you're like me, I was good in math, but the moment we finish the exam, that transfer doesn't carry on in future years. Not always, anyway. So there are some structural issues with direct instruction. So productive failure now turns it on the head. Productive failure, the science is clearly shown. If you actually start to activate the brain, the cognitive ability in students in a very open manner, but very deliberate manner, and design that the students actually fail, right, questions, right? And we'll talk about that in a minute. Alfred, sorry I'm interrupting, but I Please. think it would become too large a segment to be translated. So, Understood. Okay. shall I just stop you over here, and may Yes. I just explain this? The first part, yes. Okay. The first part of it Yeah. easily to the teachers who are here.
तो Yes, please. अल्फ्रेड सर का ये मानना है कि हम लोग जब साधारणतः जो टीचर क्लास में पढ़ाता है वो इस तरह से पढ़ाता है कि एक कोई एग्जाम्पल देता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। पर्टिकुलरली अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें, गणित की बात करें, तो हम क्लास में जाते हैं, एक फॉर्मूला बच्चों को समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, उसी के दो तीन एग्जाम्पल्स देते हैं और फिर बच्चों को कहते हैं कि इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और हम उनको आंसर्स देते जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे उसी तरह से करेंगे। पर हम कभी उन्हें ये नहीं बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आप हमें बताइए कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब सिर्फ मैथ्स का ही नहीं उदाहरण हो, पर अगर हम कोई भी सब्जेक्ट लें, हम हमेशा टीचर लोग जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम बच्चों को डायरेक्टली बताते रहते हैं कि अगर आप इस तरह से करोगे काम तो आपको सल्यूशन मिल जाएगा। पर हम बच्चों पर बहुत कम समय ऐसा होता है कि हम बच्चों पर छोड़ देते हैं कि आप ढूंढ के इसका सल्यूशन निकालो, आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो, इसमें थोड़ा ढूंढो कि किस तरह से आप इसका नतीजा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके के पढ़ाने की पद्धति को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिससे कि आपको उस वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली हम बच्चों को बता देते हैं कि आप इस तरह का सवाल होगा तो इस तरह से काम करोगे, ये पद्धति है और आपको इस तरह से ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। पर इनका मानना ये है कि अगर हम इस तरह से आंसर्स बच्चों को डायरेक्टली ना दें और उनको थोड़ा अपने आप से एक्सप्लोर करने दें, तो वो खुद ब खुद डिस्कवर करेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है। ऐसे करने से उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुद डेवलप होगा, वो अपने आप सीख सकेंगे, ना कि सिखाए जाएंगे सब समय। तो ये अभी तक अल्फ्रेड ने कहा। यस अल्फ्रेड, प्लीज कंटिन्यू। Thank you so much. Okay. So then what is our solution? The solution is we turn this on their head and we start with what we call productive failure. So we do problem solving followed by the instruction. Now, what's different, right, in our problem solving? The problem solving is with the intent of inducing a failure, not by being tricky, right? But looking at the concept, let's say it's a math problem, and asking ourselves, what is the natural intuition or misconception that a child might have when they are trying to solve the problem? Or if it is a problem, what's the first logical answer that they would look at? And if we make it unsolvable or not clear, then we force the child or the student to then pivot to a new way of trying to design. So this really engages the child. And most importantly, right, I've covered the effect for learning. You can see there. It also reduces anxiety, right? So math anxiety is a problem that happens when a child struggles to keep up with formal knowledge and math, because in schools we just have to keep carrying on with the curriculum, right? If you're falling behind, you either get tuition, or even with tuition you might develop the anxiety. So all these problems are also using non-formal language so that it becomes a fun experience and a safe experience to fail. Now, once that happens, when the instruction then comes by the teacher, the expert, the effect is tremendous. It's not a small effect. It's what we call a 3x effect, right? Where now the child is prepared to receive the instruction. Maybe I'll let the translation and then I'll give an example. Brinda, do you want to cover, or Rahul? Rahul, would you want to take that? Yeah, Rahul, come. You please do. Yeah. हाँ। तो जैसे अल्फ्रेड जी बता रहे हैं कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में, जैसे मैम बता रही हैं, वृंदा मैम, की जब हम किसी को कुछ बोलते हैं कि ये सम है, ये इसका आंसर है, और वो उसको सीखते हैं, तो लिमिटेड नॉलेज ही ट्रांसफर होती है। बट अगर हम प्रोडक्टिव फेलियर के थ्रू कुछ ऐसा डिजाइन करें कि बच्चों को इन अ सेफ एनवायरनमेंट हम उसको
थोड़ा सा प्रॉब्लम दे जिससे वो भटके और उनसे गलतियां हो जाए, और उनको ऐसा डिजाइन करते हैं ताकि उनकी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हमें समझ आ जाए, और उनके समझने से ऐसे क्रिएट करते हैं कि उनको और कुछ टाइम में लर्निंग हो जाए, डीप लर्निंग हो जाए उस कॉन्सेप्ट की। और उससे क्या होता है कि जो एंजाइटी होती है फॉर्मूला लर्न करने की और दूसरी चीजें, उससे बच्चा डरता नहीं है, और उसको कॉन्सेप्ट लेवल पे बच्चा समझ सकता है थ्रू, और जैसे चलता है तो बच्चा गिरता है और फिर खड़ा हो जाता है फिर से और चलता है, तो वैसा रास्ता उसके लिए बन जाता है, जिससे वो समझता है कि वो क्यों गिरा उस गड्ढे में, और अगली क्या उसे फेस करना पड़ेगा आगे। तो उससे उसकी एंगेजमेंट अच्छी होती है, उसकी क्रिएटिविटी होती है, और उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जिससे उसकी रेजिलियंस और क्रिएटिविटी भी बढ़ता है। ये साइंस ने प्रूव किया है। और डायरेक्टली लोगों को बताने से इस मेथड में 3 गुना ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है बच्चों में लर्निंग कॉन्सेप्ट की और रिजल्ट में भी। तो ये अल्फ्रेड बता रहे हैं। हाँ, आई जस्ट एड ऑन टू दैट। Yep. तो जो राहुल और ने अभी आपको बताया, कुछ शब्दों का इन्होंने यूज किया है यहाँ पे, कुछ शब्द यूज किए हैं, और ये लिखे भी हैं आपके स्क्रीन में भी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले डीप लर्निंग। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएं कि डीप लर्निंग क्या होता है। एक होता है कि सरफेस लर्निंग, जो आप कि कुछ समय के लिए आप उसे सीखते हो, जब एग्जामिनेशन आप देते हो तो आप उसे भूल जाते हो उसके बाद में, और आपको याद नहीं रहता है। जैसे हम लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट्स मैथ के क्लास में पढ़े हैं। अगर मैं आप में से किसी से भी, मैथ के टीचर के अलावा किसी से भी पूछूं कि क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने शायद क्लास 8 या 9 में पढ़ा था, उसका कुछ भी अभी याद है, तो ये बहुत कम मिलेगा आपको आंसर कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे यूज करना है ये भी याद है। लेकिन मैं इजीली कह सकती हूँ कि 80% से 90% लोगों में ये नहीं याद होगा, क्योंकि उन्होंने उस लेवल के लिए पढ़ा था, उस परीक्षा के लिए पढ़ी थी, पर डीप अंडरस्टैंडिंग या डीप लर्निंग के लिए नहीं पढ़ी थी। पर इनका कहना है कि जब आप खुद ब खुद उसको यूज करते हैं, उसको आप सीखते हैं, तो आपको पता लगता है। आज का एग्जाम्पल संदीप सर ने दिया था मेरा, कि मैं शायद गलत इस पे मैंने लिंक पे ज्वाइन करने की कोशिश की थी। तो मैंने क्या किया, मैंने काफी स्ट्रगल किया। पहले तो मैंने फोन पे खोला, फिर मैं लैपटॉप पे मैंने कोशिश किया, और आखिरकार मैं लैपटॉप में ज्वाइन कर पाई हूँ। तो ये क्या हुआ कि अब मुझे पता लग गया कि अगर मैं यहाँ पे किसी कारण से फंसती हूँ तो मैं इसमें से कैसे बाहर निकल सकती हूँ। ये मेरे लिए एक लर्निंग हो गया है जो मैं भूलूंगी नहीं इजीली। तो इस तरह से अगर हम कक्षा में भी जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं, उसको अगर हम पढ़ाते हैं, तो इनका कहना है कि जो डर रहता है, जो एंजाइटी रहती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए तो बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है, वो कम हो जाएगी। बच्चों में रेजिलियंस बढ़ेगा। रेजिलियंस का मतलब है कि सहन शक्ति, और वो शक्ति जिससे कि आप उसको ट्राई करते रहोगे, ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे कि एक बार ट्राई किया फिर नहीं हुआ तो हमने हताश होके छोड़ दिया, नहीं। अगर हम डिस्कवरी लर्निंग करेंगे तो बच्चे बार 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 कोशिश करेंगे, अपना लॉजिक यूज करेंगे, अपना इंट्यूशन यूज करेंगे, अपना प्रायर नॉलेज का हेल्प यूज करेंगे, और उस तरह से आंसर खोज कर लाएंगे, और ये उनके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। यही मकसद है प्रोडक्टिव फेलियर का। All right, Alfred, please Thank carry on. you. I think I've Yeah. made your job slightly easier by Yes, further yes. And explaining to them yes, yes, you what. have. You have. I can hear it as well. Thank you so much. You can move to the next slide also, Alfred. Yeah, Yeah. I'll move. So Yeah. very quickly, I mean, the way we look at productive failure is we want to supercharge the teaching that is already going on in schools, and that is already interesting. That we've talked about so much, but I think what is interesting is when we talk about improved resilience, this is a big problem to fix. I mean, certainly, from my discussions in India, we find that this resonates with what's happening in India. But reflecting to Singapore,
right? Our young kids, right, are not resilient, right? There is, when we even talk to schools and teachers, first sort of worry is, oh, when we use the word, even the word failure, right? Is this okay? Will this be negative to the child and stuff like that, right? So it's actually a very interesting conversation. So as much as the teaching and the results are super important and the science is strong, actually on the resilience side, dealing with failure, this effect, which is part of the pedagogy, is something that's very, very interesting. So how do we get our students from not having a meltdown when it's in a safe environment, but moving towards a culture of learning and understand that they learn more effectively? So that's a real great outcome of productive failure that we'd like to see, in all students. Rahul? वृंदा मैम, वुड यू, आप आपका सिखाने का तरीका कुछ जानिर से ज्यादा अच्छा है, तो आप अगर लेना चाहेंगे तो प्लीज। नहीं तो अभी अभी ही मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब इस तरह से प्रोडक्टिव फेलियर के की मदद से अगर हम क्लास में पढ़ाएंगे तो ये हमारे टीचिंग को, हमारे पढ़ाने के तरीके को सुपर चार्ज करेगा। इसका मतलब है कि उसका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, क्लास में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, बच्चों में ज्यादा पेशेंस और रेजिलियंस बढ़ जाएगा, और आपका जो रिजल्ट होगा बच्चों का वो 3 गुना ज्यादा होगा इनके रिसर्च के मुताबिक। तो ये एक चीज हमें बहुत सोचने की जरूरत है कि क्या हम इस तरीके को अपने पढ़ाई के तरीके में, पढ़ाने के तरीके में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और इसको करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी आपको और भी आगे समझाएंगे कि इसे हम किस तरह से क्लासरूम में कर सकते हैं। Okay, thank you. So I think that's a very brief overview of productive failure. Before I go into the AI and some thoughts of AI, should we pause, or Brenda or Sandeep, should I carry on? Yeah, just to tell you, you have only 15 minutes more. Okay, then I'll very quickly go through so we can have some ideas here. So I have only 2 slides on AI, right, that I wanted to really cover. One is it's everyone is trying to grapple with what AI is doing in education, and there are many areas that AI is helping. It might be helping in administration in schools and for teachers. It might be helping in designing questions. But these are 5 things we'd like people to ask. We have an AI playbook that helps teachers, administrators, principals, etc., to separate the noise, because every day there's a new AI company in education. So if we ask people, make sure you ask these 5 basic questions, right? So you're clear in when you evaluate artificial intelligence in education. So firstly, why are we doing this? Make sure its education purpose is clear, right? Sometimes it's not, because sometimes it's based on gamification, for example. Second question is, what is the underlying learning model and pedagogy? How is learning supposed to happen? Third, is there scientific evidence that it already works? Fourth, how do we move? AI has a propensity to go from direct instruction. So if you ask it, please explain the Pythagoras theorem, as mentioned just now, it will give you the answer, right? So does the AI give you the answer, or does the AI allow scaffolded learning for the child to get the answer? And lastly, how good is the quality and design, right? So obviously in LearnPF, we try to do this, but this is just general. Anyone who's grappling with this idea of how do I use AI in education, I think these are the questions to be asked. Brenda or Rahul? Very quick one as an overview. Rahul, please carry Rahul, on. just very quickly. क्या क्या तो जैसे अल्फ्रेड बता रहे हैं कि एआई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत लोग एआई एप्स बना रहे हैं और बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल तो टीचर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि सीबीएसई के रिजल्ट्स स्टेप वाइज दे दीजिए मुझे आंसर्स फॉर मैथ्स। तो हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन, वो हम जो एआई में कंसंट्रेट कर रहे हैं और जो हमारा प्रोडक्ट भी है,
वो एजुकेशनल पर्पस पे ही है, ना वो गेमिफिकेशन के लिए है, ना किसी चीज के लिए है। और ये देख रहे हैं हम कि लर्निंग कैसे हो रही है बच्चों की, हम उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका माइंड गेज करते हैं और उनसे एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल जो लर्निंग है वो हम उनकी बढ़ाना चाहते हैं। और बाकी लोग अपने अच्छे ग्राफिक्स दिखाएंगे, कुछ दिखाएंगे और अच्छा गेमिफाई करेंगे। बट हम बिलीव करते हैं कि जो हम साइंस सिखा रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड है। और जैसे हम बता रहे थे, डॉक्टर मन्नू एंड अल्फ्रेड जिस पे काम कर रहे हैं, ये बेस्ड ऑन 20 years ऑफ एविडेंस है। तो ये भी एक बहुत जरूरी है कि एआई उस ऐसी चीज से बना होना चाहिए विच इज ग्राउंडेड इन एविडेंस। और ये हम कैसे आप बच्चे की जर्नी को अब टैप कर सकते हैं और उसको कैसे हम ले जा सकते हैं, इसके बारे में हम सोचते हैं और हम इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। और बेसिकली हमारा एजेंडा ये होना चाहिए कि हम बच्चे को सिखाएं और उसको वो एक रैपर की तरह होना चाहिए फॉर सो दैट हम बच्चों को एजुकेट करें इन द राइट प्रॉपर मैनर। एंड हम एआई को एज अ टूल यूज करें फॉर द गुड of the children for better conceptual learning. Okay, I'll quickly move to the last thing. Yeah. So, and I won't go through the details, I'll just highlight. So, while we say the student is the heart of everything that we do, we know that in the center of this is the teacher and the classroom. So, what is it that we can do to help the teacher to, again, as we said, amplify? So, we keep it simple. We do all the design in terms of content. What we do want the teacher to concentrate is just giving the class, whether it's as is today, which will already be amplified, or using our system where the productive failure pedagogy is there. And even figuring out the AI by the thought leaders, by us. It's very difficult for schools by themselves, right? Even large schools, to try to figure out what AI should be in education, right? So you will definitely defer to experts in the field and then give your expert opinion to improve it. And so that's our approach. So that's it. I thought, okay, Rahul, very quick one on this as well. हाँ, जैसे अल्फ्रेड बोल रहे हैं कि बिकॉज एक डिजाइन प्रिंसिपल है, एक तरीके से इस एआई को डिजाइन करना चाहिए। हमने इस जो कंटेंट वो है वो आफ्टर रिसर्च हम लोग ही डिजाइन करते हैं। और हम लोग ही टीचर को एट द फो फ्रंट रख के ये चीज रखते हैं ताकि टीचर भी सीखे, बच्चे भी सीखे और ये अलाइनमेंट में हो, ताकि जो हमारी एनईपी की जैसे हमारे गवर्नमेंट ने एनईपी के जो अलाइनमेंट की बातें सोची है, सोशल डेवलपमेंट, पीएएल, उन सबको हम ही सारा ये चीज देखते हैं और हम उनको एक ऐसा डिजाइन देखते हैं जिससे वो अच्छे तरीके से समझे और टीचर भी को भी पढ़ाना में उनको अच्छे इंसाइट्स मिले ताकि वो उनको ज्यादा इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ा सके। Okay. Yep. I think, yeah, we probably double the time to translate. So maybe we have some questions, or how do we proceed? हाँ, आई थिंक वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। अगर आप में से कोई भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो जल्दी से, इट विल बी नाइस इफ यू पोज योर क्वेश्चंस। Meenakshi had some thoughts. Meenakshi, Yeah. would like to ask something, because you are very innovative in your way of approaching a class and learning. Meenakshi Prasad. Yeah, so actually, I've been working on AI recently quite a lot, and Okay. I sort of came across a very strange set of problems. I was trying to convert some data, a huge amount of data, into English and place it into Excel. After some time, AI started doing its own thing. I would place a page over there to be converted, and it would go and convert another page or come up with another set of lists and all those things. So that was a little funny for me because I wasn't expecting a machine to be doing, to be doing that, technology to be doing that. But Yeah. later on, I realized, that was my productive failure way of learning. That after every set of work it does, the AI comes up with a set of questions. Do you want me to do this or this or this? And I was Yeah. very nicely ignoring it.
And because I was in a hurry to complete my work because the task was mammoth. So then I realized if I'm in a hurry, AI is not going to, I have to be polite with it. I have to sit and answer its questions, and then it is going to work nicely. Otherwise, it's going to just eat up on the time. Now, I'd like to understand why this with AI. I mean, why does it need to have ask questions after every task it does? Yeah, so it is that's how it's designed today, right? Programmed to do that. Yeah, it's trying to encourage you both to provide solutions, but of course, the more you ask, the more they make as well, right? So I think it's a bit of both. And you're right. So I mean, I encourage everyone to try it, right? I think with your expert view, making sure you don't take it wholesale, because it's very easy for individuals to do that. And as you have learned, especially if you do it in one thread, it starts to get a bit fuddled. Actually, it starts to struggle a little, and it might go off track, right? That's where sometimes wrapper AIs versus proper engineering helps to do better. But that's the nature, right? So it's both a good and bad thing. I always, when I tell students, I say you can have this conversation forever. Yes. So be clear at some point, pivot to the next, and things like that. Almost as I have to just be want to, Meenakshi, as please patient finish. with it as I would be with a student of mine. To be very Exactly. patient after each and every question. And in a way, it is nice because for me, I was in a hurry, so maybe I found it a little cumbersome. But if children are doing that, what I was doing, so to them, well, they'll have to become a little alert and read and all those things. It's a nice thing. But I think, Meenakshi, what Alfred is also trying to tell us is that while you just go on to you just try to use AI to help you with whatever you want to do, sometimes this kind of fuddling can happen. But what Alfred was trying to say is that the way they have designed AI to work for productive failure is in a controlled manner so that this doesn't happen. It will lead the students to the right kind of steps in order for them to be able to discover the answers. So I've seen it happening in a classroom situation, and I've seen how AI directs the students to question what their finding is and to further give them triggers so that they can go on further discovering the answer. So before I go say anything, Alfred, we have one more hand raised. So if you can ask, please ask your question. There's somebody from PYDS raising their hand. Yes, please. Hello, sir. Hello, Salama. I have a question that can this productive failure work in languages subjects also? Yes. Can it work? Because like in science and maths, it is a problem solving. We know that, and it is easy for it. But in grammar, like language subjects, can it work? Okay, so it is agnostic at the moment in terms of product, but the effort to create the curriculum in the system takes a while. So even as we're doing math, this has taken us maybe half a year, right, to get it to the right state. So what is happening now is Professor Manu is obviously not waiting and saying, okay, let's just do math. At the same time, he's concurrently researching on language. Science, right? language. Yeah. So it is actually the next thing that ETH wants to roll out through us, but it might take some time. So it is going to be slightly different. So you're absolutely right. But we know that if you look at Duolingo, for example, very successful financially, but I'm not sure how successful it is for learning the language. I find myself forgetting, right? So it's again an issue with direct instruction and rote learning. So that next change, but hopefully not too far away. Thank you, And I sir. hope for social science also you have the similar. I'm a social science teacher essentially, and there are quite a lot of things that probably we can teach them through productive failure, but quite a lot of it is also information based.
So Yeah. how are we going to interlink both? Meenakshi, the information that you need students to, look out for or to find is something that they can easily do. They're already using AI for That's that. already there. There, yeah, Yeah. but Like that for is example, only no. But there's a huge, there's a huge catch to the whole thing. See, the information that is there is so enormous that children have to be taught to sift. They need Yeah. to know to take what is actually necessary for them. Because if you give children, let's say, if you give children of class 6 a particular topic and you tell them you do research and come, they will come back to you with loads and loads of information, and they won't know what is it that they should actually, they're not discerning enough to know what to take and what not to take. So that that's is where where, that's exactly productive where solution. PF will help, because the way they have worked around PF is that they will give the children the guidance and the path to use whatever is there in the right manner to discover learning. That's what Alfred is trying to say, that it's very controlled and it is not all over the place. Yeah. So Yeah. that So part, Alfred. but there are questions like Jesus was born between 6th century BC to 4th century BC. We Mm. all yeah. and we all tell them something else, right? Yeah. Yeah, Like Yeah. December Yeah. and the first century started after for first century AD started after that. yeah, yeah. Now, Yeah. those are that is where I was wondering how will AI help, because other things productive failure we can, but there are these anomalies that we have over there in Yes. history. That is where I mean, because this There would be a lot of questions, I'm sure. yeah, Yeah. so that is what. No. So maybe I'll just add in. I think you're right. When it's procedural or a pure information fact, then there's no productive failure in that, right? In fact, if even when we look at our math curriculum, there are subjects that we say, we don't need to do productive Yeah. failure there, right? So I think it's when it's conceptual, right? And where, the failure will trigger something, right? I think it's useful. Also, there's one more aspect to the whole thing that I just wanted to explain to the teachers. There was one phrase, teachers, आपने देखा होगा slides में एक phrase था, transference of skills. We did not talk about this, Alfred. So I'm just trying Yeah. to explain to them what Yeah. transference of skills is. और Yeah. ये अगर आप NCF में आप अगर देखते हैं लेटेस्ट NCF में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, ये एक प्रायोरिटी है कि हम इस तरह से पढ़ाए कि एक सब्जेक्ट में जो स्किल हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो बच्चे दूसरे सब्जेक्ट एरियाज में या रियल लाइफ में भी उसे यूज कर सकते हैं. तो इसको कहते हैं ट्रांसफरेंस ऑफ स्किल्स. जैसे मैथ्स में जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस स्किल का हमने यूज किया, वो ऐसा हो सकता है कि वो हम ज्योग्राफी में भी यूज कर सकते हैं, या फिजिक्स में या इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं. तो ये जो फैसिलिटी है और एबिलिटी है ट्रांसफरेंस ऑफ स्किल्स, ये सच्चे लर्निंग को दर्शाता है. दैट इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट पीएफ हेल्प्स यू टू ट्रांसफर learning, transfer skills. That's what you had said in your slide. Yep. That's the gold standard in learning. Yeah. Right? Right. That he can go to future classes, or he can apply obviously in physics, science, right? Yeah. Math is used as a foundation everywhere as an example. Absolutely, yes. Yeah. All right. Sandeep, would you want to say something to conclude the session? Yeah. Alfred and Rahul, thank you. So, आज हमारे पास एक परिस्थिति है. परिस्थिति बड़ी आसान है. एक दरिया हमको पार करना है. We have to cross a river. हमारे पास दो रास्ते हैं. एक तो जो नाव जा रही है उसमें बैठ जाएं और चुपचाप दरिया पार कर जाए, कुछ सोचना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े. और इस वक्त हम ऐसी परिस्थिति में हैं अपनी क्लास में कि हमारे पास नाव भी है, दरिया भी है, और हम रोज दरिया पार कर जाते हैं. और उसमें एक दिक्कत आती है आपको. दिक्कत ये आती है कि आप कभी भी उस एक्सपीरियंस को याद नहीं रखेंगे. अब दूसरी तरफ चले,
अगर हम आपको बोलें कि आप दरिया में छलांग मार के तैर के पार करें, और जब तैरें आप अंडरस्टैंड करें कि कितना मुश्किल होता है दरिया पार करना, और जब पानी को आप तैर के पार करेंगे, ये है आइडिया एआई को यूज करने का। अब एआई के केस में क्या होगा, जैसे अभी हमने सुना कि बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंफॉर्मेशन को एआई से कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप गूगल में भी जाएंगे, जहां आप दिन रात जाते हैं, आप टाइप करते हैं यूआरएल में और जो आ जाता है उसको आप समझते हैं वो सही है। तो जो वृंदा ने कहा, जो अल्फ्रेड ने कहा, वो सही नहीं है। वो वही है जो आप नाव में हैं, परंतु आप थोड़ा स्विम कीजिए। स्विम कीजिए क्या मतलब, उसे ऐसे ना मानिए जो वहां लिखा है। आपके टास्क बार में एक आता है एआई मोड। गूगल की टास्क बार में एआई मोड आता है। आप एआई मोड में जाइए, तो जो आपका सर्च इंजन में रिजल्ट आया होगा, आप देखिए कि वो रिजल्ट कहां कहां से आया है। वो आपको एआई मोड में बच जाएगा। अब जब आप वहां जाएंगे तो आपके पास लिंक्स भी होंगे, और जब आप वहां लिंक से उसका रास्ता ढूंढेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कितना कुछ सीख गए। तो मैंने एक बड़ा फिगरेटिव एग्जांपल दिया था कि आप गूगल टास्क बार में जाके, सर्च बार में जाके, आप केवल पहले जो लिंक आया है, जो पहला आंसर है, उसको मत देखिए। आप ये देखिए वो आंसर कहां से आया है। जैसे कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए क्या वो असली है या नहीं। और जैसे हमको राहुल ने बताया कि एक बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है, एक बच्चा साइकिल चलाने की कोशिश करता है, जब तक वो गिरता नहीं है उसको समझ नहीं आता बैलेंस कैसे बनेगा। तो इसलिए जब आप क्लास में पढ़ाते हैं, केवल किश्ती मत दीजिए बच्चों को। बच्चों को लकड़ी दीजिए और बोलिए इसकी किश्ती बनाइए और फिर नदी पार कीजिए, फिर आएगा आपको सीखने का आनंद। तो एआई का मकसद केवल यही है कि हम आपको रिसोर्सेज दे रहे हैं। आप रिसोर्सेज को लेगो की तरह इकट्ठे समर्पित करके जोड़ के एक मॉडल बनाइए और अपना नया क्लास में रास्ता निकालिए। वृंदा जी ने एक छोटी सी चीज कही, आप एनसीएफ की बात करें, आप जाके एनईपी की बात करें, सब जगह यही कहा है कि स्किल सेट्स ट्रांसफर होने चाहिए। केवल हमें नॉलेज नहीं चाहिए। जब तक हम स्किल सेट नहीं दे पाएंगे तो हम बच्चे को तैयार नहीं कर पाएंगे। मैंने एक संक्षिप्त में, इन a small summary, I've tried to explain with some examples. I hope Brinda that has helped. Surely it has helped, Sandeep. और मुझे लगता है कि the teacher should give this whole thing a thought और अपना रिफ्लेक्शन इसी पे सेंटर करे कि पीएफ का उन्हें क्या समझ में आया है और प्रोडक्टिव फेलियर का मतलब क्या। ये तो एक अंग्रेजी में जो कहते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच यूज करें तो ये एक ऑक्सीमोरॉन है। फेलियर कैसे प्रोडक्टिव, दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, फेलियर और प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव फेलियर। तो हम फेलियर को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाएं, इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए, इसके बारे में रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमें अपने इस क्लास सेशन के बाद। यस संदीप। वृंदा, एक चीज और बहुत जरूरी है। जैसे हम माचिस जलाते हैं ना, हाँ। बच्चे को पहली बार देते हैं, उसका हाथ जले ना, तो हम कोशिश करते हैं उसका हाथ ना जले। तो यस। इसलिए अगर हम आपको रिफ्लेक्शन पे भी कहेंगे और आप हमारे से सवाल पूछेंगे प्रोडक्टिव फेलियर के, आपको एक एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा। अल्फ्रेड ने तो सिंगापुर की भाषा में बोला, वो हमारे हिंदुस्तान में हमको शायद समझ ना आए, ये भी प्रोडक्टिव फेलियर है, पर मैंने समझ लिया और मैं आपको रूपांतर करके दे रहा हूँ। ये देखो ना, ये भी एक तरीका है। तो इसमें से मेन चीज क्या है कि जब आप फेलियर के लिए डिजाइन करते हैं, मतलब ना सीखने के लिए नहीं, मतलब अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से सीखने के लिए। ये मत सोचिए फेलियर का मतलब नहीं सीखना। हाँ। फेलियर का मतलब है आपको तजुर्बा करना, आपको एक्सपीरियंस करना। दैट इज द मेन थिंग। और उसके लिए आपको थोड़ा सा सेफ्टी नेट बनाना पड़ेगा। ये हमने पूरी प्रोडक्टिव फेलियर किताब पढ़ी है और इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सारे रिफ्लेक्शन भी लिखे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज हमने ये सीखी कि टीचर का रोल है तीन जगह पे। एक, सेफ्टी होनी चाहिए चाइल्ड की, और दूसरा, बच्चे के सीखने के रास्ते में नहीं आना चाहिए, परंतु बच्चे को राह दिखानी चाहिए, दूसरी चीज। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हर एक एक्सपीरियंस, हर एक क्षण में सीख है। मतलब कभी मत सोचिए कि जो टाइम आप और हमने आज बिताया वो व्यर्थ हुआ। नो टाइम इज वेस्टेड, एवरी मोमेंट इज हियर टू लर्न। थैंक यू वृंदा। Yeah, Sandeep, I want to end with a little quotation by Maria Montessori. In fact, incidentally, I just shared it with Dr. Manu also. And Maria Montessori, as we know, lived many, many, many years ago.
And a lot of schools say that we follow the Montessori method in the pre-primary system. But let's see whether we actually do it. So here she is talking about um, discovery learning and not direct teaching. So she says, like a sponge, these children absorb. It is marvelous, this mental power of the child. Only we cannot teach directly. It is necessary that the child teach himself, and then the success is great. Fantastic. So Brinda, Yeah. मैं एक चीज और ऐड करूंगा इसमें. I have a 10-month-old grandson. I noticed something very unique last week. I had him with me for 48 hours. He started touching everything. Yeah. And So putting it in his mouth also, I'm yes, sure. yes. So he's doing three things. One, every surface he touches, whether it is Yes. eating surface or playing surface. So he's getting the extra sensory perception. And like you said, Absolutely. he put his mouth. And the third thing, what I noticed was, to every sound, he turns his neck. Yes. He started turning his neck to every sound. So what this is telling us is that he is using his sense of experience. And what you said with that sponge took me to my grandson right away. Yes. He is learning from the environment. Absolutely. And productive failure is where you learn from the environment. And you learn at your pace. And you Not learn. everybody learns at the same pace. Yeah. So, anyway, maybe in the next session, Sandeep, we will discover more about this, because we will come across some of these examples even in the book that we are reading. Yeah. So what I would urge everyone is that, Rahul, I've taken the liberty of sharing this simple presentation. It's very simple. What I urge everyone in your WhatsApp group, please put your questions down. Brinda and me will answer. That is step one. Step two, आपके दिमाग में कुछ भी आया इस सेशन के बाद, हमने आपको कोई ऐप का डेमो नहीं दिया, जान के नहीं दिया, क्योंकि ये सिर्फ सोचने का सेशन था. So whatever comes in your mind, आप please question वहां लिखिए. That question itself is a reflection. Remember that. कई बार आप सोचते हैं कि question मैं लिखूं या नहीं लिखूं. Please write your question, because that is a reflection. Reflection is not always an answer. Reflection is a question also. So please write your questions. And third, which is important, अगर आपने कोई experience class में किया हो जहां बच्चे गिर के खड़े हो, please उसको लिखिए. Thank you, Brinda, for letting me talk so much. Oh, thank you also. And thank you, Alfred, for that lovely presentation, and Rahul for all the Thank you, ma'am. presentation and the help. And from me as a thank you, ma'am, sir, because you obviously know the pedagogy, you know the AI. I enjoy listening to you as well. Thank you. Thank you so much. And I think you would have picked up a wee bit of Hindi, discovered a wee bit of Hindi. I obviously have to. So Rahul, this is your number one task. Okay. Thank you so much. Wonderful. Thank you, everyone for thanks Sandeep and everybody. Thank you. you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you.